Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for ninth class. Today we will discuss about the mineral deficiency diseases. Diseases which are due to the deficiency of different minerals in the body are called as the mineral deficiency diseases. वो डिजीज़ जो डिफरेंट मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं उन्हें मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल लाइक गोइटर इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट. सो गोइटर इज़ अ मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़. Similarly, anemia is a disease which is due to the lack of proper iron in the nutrients. So that anemia is also a mineral deficiency disease. So firstly we will discuss about the goiter. So goiter is a condition caused by an insufficient amount of iodine in diet, and iodine is required thyroid gland to produce this hormone called as thyroxine, and thyroxine hormone is necessary for the normal functioning and the growth of the body. In case if sufficient iodine is not available in diet, thyroid gland becomes enlarged and it results in swelling of neck, and this condition is called as the goiter. अगर डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन थायरोक्सिन सीक्रेट करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है. ठीक है, क्यों थायरोक्सिन क्यों सीक्रेट किया जाता है? ताकि बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके और बॉडी की ग्रोथ के लिए. अब जब डाइट में आयोडीन सफिशेंट अमाउंट में नहीं है तो क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है जिसकी वजह से नेक स्वेल हो जाती है और इस कंडीशन को गोइटर का नाम दिया जाता है. नेक्स्ट वन एनीमिया. एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल मिनरल डेफिशिएंसी disease. The term anemia literally means lack of blood. The term anemia literally means the lack of blood. It caused when the number of red blood cells is reduced than the normal. Why it is caused? When the number of red blood cells is reduced than the normal. Hemoglobin is a molecule which is present in the red blood cell, and the main atom of the hemoglobin is the iron. So iron atom is the main atom of the hemoglobin molecule, and hemoglobin carry the oxygen from one part of the body to the other part. When there is a deficiency of iron in our diet, so hemoglobin molecules are not formed. In this case, there are not enough functioning of red blood cells, so the patient is weak and there is shortage of oxygen supply to body cells. Okay, when there is a deficiency of iron in diet, so hemoglobin molecules are not formed. In this case, there are not enough functioning of red blood cells. The patient feel weak and there is shortage of oxygen supply to body cells. अब एनीमिया क्या है? इसको लैक ऑफ ब्लड से जो है वो करेक्टराइज किया जाता है. इसमें क्या है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो नॉर्मल अमाउंट से कम हो जाती हैं. हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक आयरन एटम होता है. जब डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल नहीं बनते. अब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अगर नहीं बन रहे तो उसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे. जब रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, उनका फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो बॉडी सेल्स होते हैं ना वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है. नेक्स्ट वन, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. OIN means over intake of nutrients, and over intake of nutrients is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the normal amount. More amounts of nutrients are taken than the normal amount which is required for the growth, development and for the metabolism. For example, over intake of carbohydrate leads to a situation called as obesity, diabetes and cardiovascular problem. Similarly, the high doses of vitamin A causes loss of appetite and liver problems. Next one, effect of malnutrition. What are the effects of malnutrition? There are different effects of malnutrition. First one, starvation, heart diseases, constipation, obesity. So what is starvation? Starvation actually a severe reduction in nutrient than the normal amount which is required for the proper functioning of the body.
and it is a very severe condition and very dangerous condition for the human beings. Similarly, heart diseases are also increasing on the global level, and the most common reason of heart diseases is the high doses of fats in diet. Okay, high doses of fats in diet will lead to the heart diseases. Similarly, constipation is also a condition which is characterized by the malnutrition. And last one, obesity means becoming overweight, and it also be due to malnutrition. Okay, and obesity is known as the mother diseases of, because obesity leads a number of diseases like heart problems, hypertension and diabetes. सो फर्स्टली हमने बात की ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की. अब ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मतलब है जब आप डाइट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेते हो, वो नॉर्मल अमाउंट जो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, उससे ज़्यादा अमाउंट ले लेते हो. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं. एग्जाम्पल की बात करते हैं, लाइक आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं, इनसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. इसी तरह से हाई डोज ऑफ विटामिन ए अगर आप ले लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगती और लिवर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. सिमिलरली, मेल न्यूट्रिशन के फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले स्टारवेशन है. स्टारवेशन में क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप रिक्वायरमेंट की निस्बत बहुत कम ले रहे हो. ठीक है, तो इस कंडीशन को स्टारवेशन कहा जाता है. हार्ट डिजीज़ जो हैं वो मोस्टली तब होती हैं जब हम फूड में बहुत ज़्यादा फैट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन भी मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती है. और ओबेसिटी है, ओबेसिटी में इंसान जो है वो ओवरवेट हो जाता है. ठीक है, मोटापा जो होता है उसको ओबेसिटी बोलते हैं. और ओबेसिटी क्या है? ये मदर डिजीज़ है. मदर डिजीज़ का क्या मतलब कि हर डिजीज़, हर बीमारी की माँ है. लाइक फिर ओबेसिटी से ही हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, सो ओबेसिटी इज़ द मदर डिजीज़ ऑफ ऑल. नाउ note the question related to that topic. Question number 1 is, what is goiter? So the answer of this question covers this paragraph. Start from goiter and end at goiter. Okay. Question number 2 is given, what is meant by anemia? So answer of this question start from here. Anemia is the most common and ends at this point, supply to body cells. Question number 3 is given, define OIN. So what is OIN? Over intake of nutrition. So answer of this question covers this paragraph. Start from here and end at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. गॉइटर क्या है? तो इसका आंसर बेटा आप लोगों के पास यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एनीमिया से क्या मुराद है? तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है. ये आपके पास एनीमिया है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, OIN की तारीफ़ करें. और OIN क्या है? ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो इसका आंसर बेटा आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है.